अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। One of our beloved brother Domi al-Faruq, Allahu Akbar, he wrote a very good article, good post on this, that do you know why it is forbidden to fly over the Kaba and there is no airport in Makkah? ये कह रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि काबा के ऊपर हवाई जहाज़ क्यों फ्लाई नहीं करता और मक्का मुकर्रमा में एयरपोर्ट क्यों नहीं है। द इंफॉर्मेशन विल सरप्राइज यू, जो आपको मालूमात मिलेगी वो आपको हैरत में डाल देगी। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट ब्रॉट मैनी पीपल टू इस्लाम, और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है इस्लाम की तरफ आए हैं। सोर्स सफ़ा, द काबा इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, काबा जो है दुनिया का मरकज़ है। इट इज़ इन द मिडल ऑफ द अर्थ विदाउट एनी डेविएशन और डिफॉर्मेशन, ये बिल्कुल दुनिया के मरकज़ में है। एंड बिकॉज इट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स नेचुरली अट्रैक्ट मैग्नेटिक चार्जेस टू दिस प्लेस। तो जो चुंबकीय कहना चाहिए, जो मक़नातीसी अट्रैक्शन है, मक़नातीसी झुकाव है, वो इसकी तरफ होता है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू वेलकम द सनराइज़, और इसी वजह से सूरज का निकलना, सूरज का तुलू जो है इस पॉइंट को मुतासिर करता है। फॉर दिस रीज़न एंड द फैक्ट दैट काबा इज़ द सेंटर of the gravity on the earth, a center of attraction and confluence of the cosmic rays of gravity on the surface of the earth and void zone in air layers. So it's impossible to fly over Kaaba whether by bird or even place because it's magnetic attraction center. तो इस वजह से जो मक़नातीसी मुतासिर होता है इसके अंदर, तो ये चीज़ें चाहे वो प्लेन है, चाहे वो चिड़िया है, दूसरे किस्म की चिड़ियाँ हैं, वो उसके ऊपर नहीं उड़ सकती। दिस इज़ द indeed confirmed by science, and planes and birds can't fly over Kaaba because of magnetic attraction. And this is why Saudi Arabia has no airport in the Makkah city, और इसी वजह से मक्का शहर के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है। This also explains why despite the large number of birds around the Kaaba, they only fly around the Kaaba, not over it. अगर आप खाने काबा जाएंगे, बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे हज़ारों किस्म की चिड़िया हैं वहाँ पे, लेकिन उसके चारों तरफ घूमती हैं, ना कि उसके ऊपर से। प्रेज बी टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट द काबा इज़ द लाइट ऑफ द अर्थ, और ये भी नोट करने वाली चीज़ है कि काबा जो है इस दुनिया के रोशनी है। द लाइट कमिंग फ्रॉम काबा transcends space and through the sky to the light of the house of Allah in the sky. This is Baitul Mamur, which is perpendicular to the house of Allah on the earth, Kaaba on earth. Takbir Allah, God is great. ये कह रहे हैं कि जो बैतुल मामूर है वो बिल्कुल इस काबा के ऊपर है, और मैं समझता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसका मफ़हूम ये है कि ये सिमेट्री ऐसी है कि अगर बैतुल मामूर से कोई पत्थर डाला जाए तो वो सीधे खाने काबा के ऊपर आके बैठेगा। एज अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड द कुरान अमंग द बुक द काबा अमंग द मॉस्क द प्रोफेट among the men and Zamzam among the water, the earth among the plants. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को तमाम किताबों पर फ़ौक़ियत दी है और काबा को तमाम मस्जिदों पर, and
जो ज़मज़म पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों पर, और ज़मज़म पानी जो है उसको दुनिया के तमाम पानी पर, एंड अर्थ अमोंग द प्लैनेट्स, और इस कायनात के अंदर जितने प्लैनेट्स हैं उन सब के ऊपर ज़मीन को फ़ौक़ियत, ज़मीन को प्रायोरिटी दी गई है. मे अल्लाह ब्लेस यू इन द सेम वे यू गिव यू बेनिफिट ऑफ व्हाट यू सीक. आमीन अल्लाहुम्मा आमीन. माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर. अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे. आई थिंक दे मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु आर कमेंटिंग हियर आर फ्रॉम France, as I have seen that their comments especially in French language, but I have seen some comments in Portuguese language also. So, as author Domi Al Farouk, Allahu Akbar, the author wrote this. May Allah bless you, dear Domi Al Farouk. And some people can't see mention here. Many thanks to you for reminder. और grand merci et vous pour la rappel amin या रब्बी. I think it is in French. और उसके बाद में है that is Anta Samira ऐप से ग्राम ब्यूटी. क्या लिखा है इन्होंने? Praise be to Allah. Praise be to God. Thank Allah for making me a Muslim and Muslim parents. Praise be to Allah. Praise be to Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And this Meadow Fofana. Amin. May He guide us on the right path. Amadou Hassane. To Allah belong the sovereignty of the heavens and earth, and to Him is the destination. MashaAllah, he wrote very good things. And Abud Ramane कौन? ये कह रहे हैं मर्सी इन्फिनिमेंट. इसका मतलब थैंक यू सो मच. ओके. और उसके बाद में है जिनीनी गास्टन बोंकियन सेस्ट. I think it's in French. What is it? Ignorance will kill Africa. We tell him nonsense and say Amina is pathetic. What his mean? Abul Bakr respond him. What Abu Bakr said? Germany, okay, tell us what is the truth, your truth. Abdullah Konate, he responded this. Germany Gaston, what do you call stupidity here? Be a little educated, bring us your enlightenment if you know anything. I think this is Germany. That's I do not want to involve this kind of argument which is irrelevant. Now this Maimona Khan, she wrote here. So tell us the truth as Allah forgive us. And Boga Siddiq Al-Qadsori, what his writing, saying language is different. Janini Gaston, that's why they knew how to trick you, that Africa is cradle of humanity, my dear, wake up. And Mahmoudou Saliu Drame is saying this is not true. This is some bullshit. Why he wrote like that? Yusuf Diama responded to Janini Gatson. What he respond? It's scientific, proven by researchers. Nice to inform you, my dear.
I like this comment. Instead of going in wrong way, he give very good response on that one. And Maimuna Kone is saying to Selimodrem. Wachia Bakayo, go on Google. Okay. Fatimata Amin saying Amin Ya Rabbi. Abdullah Diallo, Dio es Telegrandor, matlab God is the greatest. Allahu Akbar. Petito Dao, Mashallah, mercy Buko por set information. What he wrote here, Mashallah, thank you very much for this information. And Isi Iaga Silla, Dio est grand, God is great. Allahu Akbar. I think this is Dio est grand. Allahu Akbar. Sara Dombia, Allahu Akbar. And Hosseini Kirakoya, Charles Ferris Muslimans Rebellion nos do summons the El ignorance. Dear Muslim brother, wake up from ignorance. Hosseini. Okay, next is Maryam Sangaro Amin Alpha Omar Bari. Allahu Akbar. What saying? God is great. Praise purity to Allah Azza wa Jal. MashaAllah. Alhamdulillah. Amina Muhammad Felulu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. And Rasin Nasrullah Amin Mercy Kullah reinforce the connaissance, means thank you, may Allah increase your knowledge. MashaAllah, this is people, a lot of people write too much, and really it's at those commenting here, they had very attraction on this very informative articles. I like this article, and inshallah I do hope the author will write again something more and more scientific, and it's very good information here. What he informed, that's why this bird and fly plane cannot fly over Kaba. MashaAllah, Barakallahu Feek. A huge number of people have liked it and love it. Someone surprised over this article, and a lot of people shown this emoji. More than 2,800 people love it, this article. This is really very
informative article. MashaAllah, barakallah feek. I think my finger will start while I'm rolling all these people who like this article. MashaAllah.